Yes, guys, how can achieve the abstraction in our Java programming? Two ways we can achieve the abstraction in our Java programming by using abstract classes and interface. Okay, so partial abstraction. How we can achieve the partial abstraction? By using the abstraction. By using the abstract classes. So fully abstraction, how we can achieve the fully abstraction? By using the interface concept. Also, we can achieve the multiple inheritance. We can use the multiple inheritance. Lakshmi. Okay. Multiple inheritance. How can I achieve? By using the interface concept. Class level. By using class, can we access multiple inheritance in Java, guys? We can achieve the multiple inheritance. We can use the multiple inheritance basis of a class. Class level हम achieve नहीं कर सकते multiple inheritance. By the using of a interface concept, we can achieve the multiple inheritance. But basically, our motto is that hiding the data. How can hide the data? By using which concept, guys? Abstraction concept. Through the abstract classes, place mute. Okay. By using the abstract classes and interfaces, we can achieve the abstraction in our Java programs. Abstraction. Okay. Class. Second is interface. Using these two concepts, we can achieve the abstraction in Java. So partial abstraction means not 100% abstraction. How can achieve the partial abstraction? By using the abstract class concept, right? And then if we want to access a 100% abstraction, fully abstraction, then we use which type of concept? Interface concept in our Java programs. Now see, guys, this is which class? Class test. This is the which class? This is a concrete class. Okay, this is the general class. There is a class keyword and then name of a class, and then curly braces open and close. That is the class body, right? See, this is our which class? Concrete class, general class. Okay, regular class, right? Now, how can create an abstract class in our Java? By using the abstract keyword. Using abstract. Test is a abstract now. Test is an abstract class. Test is our abstract class. Abstract class contains abstract methods as well. It contains concrete methods. Okay, both types of methods it contains. As well, it contains constructors, blocks, both types of blocks. Right? How can you use the abstract methods? How can create the abstract methods in our Java, guys? By using the abstract keyword, which is the syntax. Abstract. And then return type and semicolon. Now see, this is the abstract method in Java. Abstract methods means that is the incomplete method without a body, without the implementation. Those methods are abstract methods. Multiple methods we can declare in our abstract class. No any restrictions to declare how much methods in a class, abstract methods. Now see, guys, if we are declaring one of methods in a abstract in a concrete class, then what will happen? Now see,
This is our one new class demo. Now in this class we are creating a one abstract class white m1. Now see, this is the abstract method, right? Now tell me guys, this is the abstract method. One of the method function is declared as an abstract in our demo class. Then there is a compilation error because this demo class is the concrete class, general use class. Okay, so which is the rule? What is the rule, guys? If we are creating any function as a abstract, we are creating any function as an abstract in a class, then it should be necessary to declare that class as a abstract. Okay, it's necessary. It should be declared as an abstract. If we are not declaring this demo class as abstract, then what will happen, guys? There is the compilation error. Okay, compilation error, because we are creating a m1 function as an abstract in a demo class. So compiler told us to declare demo class as an abstract. Now see, this is an abstract class. There is any compilation error? No, there is no any compilation error. Once we are declaring a class as an abstract, without abstract declaring any class, if without abstract created class, if we are not creating any class as abstract, and then we are declaring a function as abstract in that class, then what happens, guys? There is a compilation error, because in a concrete class we can't mention any abstract functions. Okay guys, we can't make any abstract functions, right? So if we are creating any function as abstract in a concrete, then there is a compilation error. First we have to declare that class as an abstract, then that problem will be solved. Okay, so abstract class contain both types of methods, abstract methods as well concrete methods, constructors, and both types of blocks. Okay, see, there is no limitations to declaring a creating a class abstract functions. By using abstract class concept, we can achieve the 80 to 90% of abstraction. Okay, by using interface concept, we can achieve the fully abstraction as well. We can use the use of a multiple inheritance. Now, see how the program will execute. First of all, see guys, abstract class contain abstract methods so that they can be implemented in a subclass according to their implement requirements. They are also called as incomplete classes, as they have some unimplemented abstract methods. Okay guys, abstract class को हम क्या करेंगे guys? Abstract class is an incomplete class. Incomplete class means incomplete class क्यों कहेंगे? Why we should we are telling that abstract class is an incomplete class because there is a some abstract methods are used, some abstract methods are created, right? That's why we are told abstract class is a incomplete class, right? So abstract classes and abstract methods are declared using abstract keyword. We can't create object to those classes which are declared as an abstract. Now guys, we can't create of which class object, guys? Abstract class object we can't create, because that is the an incomplete class. There is no complete, means complete implementation is there. Okay, that's how we can say that is the incomplete class. And again, next is a we can't create the object of that incomplete class in our Java program. So if we are creating any class as a abstract, then that class object is not created. कोई भी क्लास हम abstract declare कर रहे हैं तो उस क्लास का ऑब्जेक्ट हम बना नहीं सकते guys, because in abstract class incomplete methods are present without the implementation. Then that object doesn't show any activities, any task, any behavior with that function.
Because of that, we can't create the object of an abstract class. And there is a standard rule in our Java programs. If we are creating any class as an abstract, then we can't create the object of the abstract class, right? We can't now but we can create object to subclasses of abstract class. But हम किसका object बना सकते हैं? We can create the object of a subclass, provided they must implement abstract methods. Complete representation of a object class means an abstract class. Concrete class से क्या होता है guys? Concrete class, complete representation of a object, and abstract class, partial representation of a object. Abstract class can be a combination of a concrete and abstract methods. Abstract methods cannot be static. Abstract methods static नहीं होते because we can't override the static methods. Constructors and field cannot be declared as abstract. Abstract methods cannot be private because we can't inherit and override the private methods. Now see one example. See, this is our test class. Can we make a main function as an abstract? Hey guys, there is a compilation error. Okay, we can't make a main function as abstract. Why? Because of main methods standard declaration syntax is a public static void main. If we are declaring a main function as abstract, then remove the body of that function and terminate the method. How we can terminate any sentence, any statement in Java, guys? By using the semicolon. Okay. See, the abstract method main in type test can only set a visibility modifier, one of public or protected, right? Now, can we declare a abstract method as a static, guys? Can we declare an abstract method as a static? No, we can't declare an abstract method as a static, right? Because static methods not overridden. Okay. Now see how we can create the static functions and static class in our Java programs by using this abstract keyword. If we are declaring any class as abstract, then which keyword is used over there? Abstract keyword is used over there. Now test is a which class, right? This test is a concrete or a abstract class. Test is a abstract class. Now in abstract class we have created creating one abstract method. Now see, this is the abstract method in our Java. Okay, M1 is a which kind of function, guys? Abstract function without the implementation. Without implementation means there is any body is present, guys. There is no body. Okay, with a M1 function, there is no any implementation part of a M1. M1 का कोई implementation part है, guys. Often there is any implementation part is present. No implementation part is over there. Okay, that's why M1 is the abstract, and M1 is a terminated by semicolon at the time of the declarations. Okay, now concrete methods in a test class. Can we use the concrete functions? Yes, we can use any number of concrete functions. See, M2 is the concrete function. See, this is the general function. It contains four types of functions, abstract as well as a concrete. Now, how the constructor will execute in a abstract classes? Abstract class constructor. How abstract class constructor will execute, guys? So we are not creating the object of the abstract class. Then how the constructor of that class will get executed? Of constructor execution depends on a object creation. Its total execution, constructor's execution depends on a object creations.
Now we are not creating the object of an abstract class. Then how the constructor of each class, abstract class, will execute it? Now see, any abstract class. If we are creating this abstract class, this is an abstract class. It's need to create a subclass. Of which class, guys? Abstract class. Because abstract class is a incompleted class. There is a abstract functions. So we can implement unimplemented function in a subclass by using the AJ relationship. Now we create a one more class E friends. Yes. Now see, this D is the subclass of which class? Test class, right? So how many functions in a test class? There is a two functions, M1 and M2. M1 is abstract and M2 is a concrete. So why is there compile time error, guys? We are extending which class? Test class. So by default, all the members of a test class is inherited into where? Into the subclass into D class, right? So there is a which function is inherited. Abstract function is by default is available, virtually is available in a D class, right? So our rule is what? What is our rule? Java rule, guys. If we are declaring, we are created any one function as an abstract in a class, then which thing is necessary? Which thing is needs to make a that class as a abstract. ओके उस क्लास को हमें एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करने की जरूरत होती है नाउ डी इज द concrete class and which function is inherited over there, guys? M1 is inherited in a D class. So abstract function is present, virtually present in a D class. That's why there is a compilation error. Make this class as an abstract. And now see. Now see, D is the abstract class. Why is there a syntax error on token abstract? Delete this token. Okay. Before the class keyword. Okay, abstract class D extends test. Now, is there any compilation error, guys? There is no any compilation error. So, inherited M1 function is implemented in D class. Then see, guys, void M1 implementation. Now, remove the which keyword? Abstract keyword. See, guys, where remove the abstract keyword. Now, see, guys, there is any compilation error? No error because there is no any incomplete function, incomplete method is available. It's created in a D class. There is any incomplete function is present in a D class. There is no any incomplete functions are available. Okay, that's why that is there is no any compilation error. Okay, there is no need to declare a D class as a abstract. हमें D class का abstract declare करने की जरूरत है अभी guys नहीं है because unimplemented function where implemented in a D class, right? यहाँ पे implement कर दिया तो आपको abstract function बचाएगा हमारे class में और there is no any abstract functions are available. Okay, यहाँ तक हमारा clear था. Now हमें देखना है कि if we are used for there in constructor in abstract class, then how that constructor will execute it without object creation. Now see how to create a class constructor. It's test. Let's see, this is the constructor. Abstract class constructor. Okay. Let's see. We create a one subclass of test. Okay. See. See, guys.
by creating the object of which class? Subclass test given, sorry, demo class with a subclass of which? Test class. D1 is equal to new demo. Right now in a demo class, there is any function, there is any constructor is available, guys. There is any constructor is created by the programmer. Now there is no any constructor is used in a demo class. So which kind of a constructor is provided in this class by the JVM, guys? Default constructor is constructed. If there is any constructor is not used over there, अगर हम कोई कंस्ट्रक्टर बना नहीं रहे, कोई कंस्ट्रक्टर अगर यूज नहीं कर रहे हैं, not constructed in a class, then which constructor is constructed by the JVM, guys? Default constructor is constructed by JVM with the empty implementations. Okay, with the empty implementation. अगर easy relation में अगर सब क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है, तो now which kind of constructor is constructed? Empty constructor, means without implementation. Now look, this type of constructor is constructed, and which keyword is present at a first statement, as a first line? Super. Now see, by using this, from this keyword, from that keyword, from that line of a code, which class constructor will call? Parent class constructor is called. Parent class constructor will get executed. Which is the parent class? Test. Abstract class is the parent class of a demo. Okay, so how many constructors in a test class? There is only one constructor in a test class. So how the abstract class constructor will get executed? By creating the object of a subclass. अब subclass का object बन रहा है, तो virtually वहां पे किस टाइप का constructor बन रहा है, guys? कमेंट करता हूँ, virtually इस टाइप का क्लास में ना फर्स्ट लाइन में यहाँ पे इस टाइप का कंस्ट्रक्टर बनेगा. ओके, विद सुपर कीवर्ड. अब सुपर से क्या हो रहा है? इंस्टेंटली किसका ऑब्जेक्ट बन रहा है, किसका कॉल हो रहा है, किसका कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है? पैरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर पहले कॉल होगा, देन द चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा. ओके, सी द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम. राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन. एब्स्ट्रैक्ट क्लास कंस्ट्रक्टर. तो समझ में आएगा इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर कैसे एग्जीक्यूट होता है विदाउट ऑब्जेक्ट क्रिएशन. एब्स्ट्रैक्ट क्लास का है ना, ऑब्जेक्ट नहीं बनता है. अगर ऑब्जेक्ट नहीं बन रहा है तो उस क्लास का कंस्ट्रक्टर कैसे एग्जीक्यूट होगा? तो याद रखो एक वन थिंग, अगर कोई भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना रहे हैं हम, तो नेसेसरी होती है कि उसकी सब क्लास बने. क्यों बनानी है सब क्लास? अगर वहाँ पे हमने एब्स्ट्रैक्ट फंक्शंस बना के रखे, बाय डिक्लेयरिंग अवर थॉट्स ओवर देयर, तो उसे हमें इम्प्लीमेंट भी करना है. अतः इम्प्लीमेंट करना है तो कहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे गाइस उसे हम? where we exactly implement those functions, those thoughts in a sub class. हमेशा abstract class की सब क्लास बनेंगी, तो उस सब क्लास में ना जितने भी इनकम्प्लीट मेथड्स होंगे abstract क्लास के, वो सारे के सारे वहाँ में हम उसे वहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे, राइट, विद द लॉजिक. तो आप समझो कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में क्लास कंस्ट्रक्टर्स यूज कर रहे हैं. एब्स्ट्रैक्ट क्लास में ना कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं, तो हाउ दोस कंस्ट्रक्टर्स विल गेट एग्जीक्यूटेड इन आवर जावा प्रोग्राम्स. अगर ऑब्जेक्ट नहीं बन रहा है तो कंस्ट्रक्टर का एग्जीक्यूशन नहीं होगा, बट वो एक कंस्ट्रक्टर है ना, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होते हैं बिकॉज वी आर एक्सटेंडिंग एब्स्ट्रैक्ट क्लास. अगर एक्सटेंड कर रहे हैं तो सब क्लास. अब हमने सीखा इनहेरिटेंस में, अगर पेरेंट एंड चाइल्ड मेंबर्स, बोथ द मेंबर्स हमें एक्सेस करवाने बाय क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ अ चाइल्ड. चाइल्ड ऑब्जेक्ट के साथ पेरेंट का भी डेटा बाइंड हो जाता है और चाइल्ड का भी बाइंड होता है, बाइंड टुगेदर. तो उससे क्या होगा? पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर भी एग्जीक्यूट हो जाएगा. जैसे इनहेरिटेंस में हमने देखा था कि चाइल्ड क्लास का अगर ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो पेरेंट क्लास का भी कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो रहा है. अगर पेरेंट का नाउ इन एब्स्ट्रैक्शन, अगर पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट होने या तो देखो कि हम
We are trying to create a parent class object, which is a parent. Test is a parent. Given is equal to new, right? तो देखो यहाँ पे भी अभी देखो यहाँ पे abstraction हुआ है क्या अभी incomplete. So, but over there we use which keyword, guys? Abstract keywords. That's why we can create the object of which class? Test class. Cannot instantiate the type test. हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं क्या? पैरेंट एब्स्ट्रैक्ट क्लास का नहीं बना सकते हैं, तो हमें उसका कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट करना है, तो वी क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ इज चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, इस तरीके का सिनेरियो क्रिएट होगा. सो वहां से किसे कॉल होगा? पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर. मोर देन वन कंस्ट्रक्टर अगर हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास में बना देते हैं, देन व्हाट विल हैपन? यहाँ पे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग. Which type of argument is passed over there, declared over there? Integer type. Okay. तो यहाँ से ना अभी ऑब्जेक्ट बना रहे हैं. अब देखो किस टाइप का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होता है. विच टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर एब्स्ट्रैक्ट क्लास विच एग्जीक्यूटेड एब्स्ट्रैक्ट क्लास कंस्ट्रक्टर ओनली. नो आर्गुमेंट टाइप कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो रहा है. व्हाई दिस कंस्ट्रक्टर विल गेट एग्जीक्यूटेड, गाइस? सी गाइस, यहाँ पे ना डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्ट हो रहा है डेमो क्लास में, बिकॉज ऑफ वी आर नॉट डिक्लेयर एनी कंस्ट्रक्टर इन डेमो. तो इंटरनली क्या हो रहा है? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो रहा है. तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में तो टाइप का कीवर्ड जनरेट हो रहा है फर्स्ट लाइन में, सुपर कीवर्ड. अब ये सुपर कीवर्ड मींस कंस्ट्रक्टर कॉलिंग स्टेटमेंट है. सुपर इज अ कंस्ट्रक्टर कॉलिंग स्टेटमेंट. ये कंस्ट्रक्टर कॉलिंग स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे कोई आर्गुमेंट है गाइस? यहाँ पे पैरेंथेसिस में कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं किया है. कोई आर्गुमेंट पास नहीं किया है, सुपर स्टेटमेंट किससे मैच कर रही है अभी? दिस कंस्ट्रक्टर. नाउ the text no are constructor, right? तो इसका एग्जीक्यूशन हो रहा है. ये वाला कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो रहा है क्या गाइस? नहीं हो रहा है. अब वो क्या एग्जीक्यूट हो रहा है? हम यहाँ से ही उसे कॉल कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस लगा दो यहाँ से. ओके, अब एग्जीक्यूशन हो जाएगा. जावा देखो वन आर कंस्ट्रक्टर, दिस से किसे कॉल होगा पहले? आर्गुमेंट टाइप कंस्ट्रक्टर से. ओके, देन एब्स्ट्रैक्ट क्लास कंस्ट्रक्टर कॉल होगा. ओके, सी अगर डेमो में ना हम कंस्ट्रक्टर बना देते हैं ना, where created the constructor in demo, then अगर कंस्ट्रक्टर बना दिया तो कॉल होता है क्या? पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा क्या गाइस? एब्स्ट्रैक्ट क्लास कंस्ट्रक्टर. वन आर कंस्ट्रक्टर, एब्स्ट्रैक्ट क्लास कंस्ट्रक्टर, डेमो क्लास कंस्ट्रक्टर. डेमो क्लास कंस्ट्रक्टर कब एग्जीक्यूट हो रहा है? एट द एंड. पहले तो क्या हो रहा है? बाय डिफॉल्ट विच कीवर्ड इज प्रेजेंट इन एवरी कंस्ट्रक्टर ऑफ जावा ऑफ सब क्लास ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास कंस्ट्रक्टर सुपर कीवर्ड इज जनरेटेड. ओके, यहाँ पे सुपर कीवर्ड रहेगा हमेशा फर्स्ट टाइम. यहाँ देखो कि यहाँ से अगर हम दिस हटा देते हैं, देखो यहाँ से हम बना रहे हैं as Java application. Now what is the output of this program? Abstract class constructor and demo class constructor. यहाँ का दिस हटा दिया तो आर्गुमेंट टाइप कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है क्या? नहीं. 2 मिनट गाइस, ब्रेक ले रहा हूँ.
So now guys, in a subclass constructor, which is a first statement, parent class constructor following statement is by default present. Okay, for not any providing any super keyword. So which is statement over there? Constructor calling statement is already present. Now see guys, in a demo constructor, with the first line by virtually there is a super keyword is present. Now we are creating a where password there some s. Then now see guys, which class constructor will call no any class, no any abstract class constructor will call, because there is a one argument string type. There also calculate the second constructor with the argument integer value, integer variable. Now, and in a demo class where created in a nor constructor, and over there we are not no use any statement to call a parent class constructor. There is any statement to call a parent class constructor, guys? No any statement is used over there. Okay. Now see which is compiled. Implicit super constructor test is undefined. Must explicitly invoke another constructor. Implicitly call हो रहा है क्या? Parent class constructor, abstract class constructor? No. Then we have to call it explicitly. So how we can call a parent class constructor in a inheritance, guys, is a relationship by using the super keyword. Now, so called how we can call by using the super, and constructor calling statement is the first statement in constructor form in a constructor. Now, over there we pass one value, so we are passing the string value. Okay, now see there is any compilation error. Which type of a constructor of a parent is called string argument type constructor is called. Now from there, which constructor is called? This one. First constructor is called. See the output of a class of a program abstract class constructor. That is the output on a console. See, run as Java application. Okay. See what is the output? Abstract class constructor and demo class constructor. Okay. When parent class constructor, which type of argument constructor is executed? String argument type constructor is executed, and then demo class constructor will get executed. Right? Okay. So, but in a class test, there is a more than one constructor, the same constructor overloading. So how can call it? By using this function. This is a constructor calling statement. This is the first statement also in a constructor calling. So passing which type of value? 10, because there is an integer argument. Okay. If we are using a super and this keyword, then there is the constructor chaining. Interviewer will ask you question. What is a constructor chaining? Constructor chaining means calling a constructor from child to parent. That is the constructor chaining. By using this current class and call a constructor for another constructor by using this. Okay. And in a user relationship, or there we use a super keyword for a constructor chaining. See? Okay, clear it. How the abstract class constructor will get executed? Creating the object of a subclass, right? Now, if we are used over there any blocks, now we are creating one block abstract class. Can we create a blocks in abstract class? Yes, we can create any kind of a block in abstract class. Abstract class. Okay. Then there is no any
constructor and abstract static block is created. Now, what is the output of this relation? Abstract class static block. किसका execution है? Abstract plus static block. So now, how the static block will execute in Java, guys? How those static blocks will execute? Next execution depends on what? ऑब्जेक्ट पे एग्जीक्यूशन डिपेंड्स होता है क्या स्टैटिक का? नहीं, इट्स बिलोंग टू द क्लास मेमोरी में लोड होते हैं एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन बिफोर द मेन मेथड एग्जीक्यूशन स्टैटिक ब्लॉक ऑफ क्लास इज एग्जीक्यूटेड. इसका एग्जीक्यूशन पहले होता है, स्टैटिक ब्लॉक का एग्जीक्यूशन पहले होता है. नाउ अब स्टैटिक ब्लॉक कहाँ पे बनाया हमने? एब्स्ट्रैक्ट क्लास में. एब्स्ट्रैक्ट क्लास में पॉसिबल है क्या स्टैटिक ब्लॉक बनाना? yes, it is possible. You can create any kind of a static blocks in an abstract class, guys. How those blocks will execute as per the rules of the Java. Now, if once now we are created one, we make a one static block in a demo class. Then what is the output? See, demo static block. See, what is the output of this program? What is the abstract class? Then demo class static block. Okay. Like a instance class can be creates, can we use an instance block in abstract classes? We can use any kind of instance block in static. IIB of which class? Okay. Its execution depends on object creation. तो किसका ऑब्जेक्ट बन रहा है? सब क्लास ऑब्जेक्ट बन रहा है. सब क्लास का बन रहा है मींस यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्टर नहीं, कंस्ट्रक्टर में तो वर्चुअली डिफॉल्ट कंस्ट्रक्ट होगा, डिफॉल्ट होगा तो सुपर कीवर्ड होगा, सुपर होगा तो पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, तो ऑब्जेक्ट बन रहा है तो इंस्टेंस ब्लॉक का भी एग्जीक्यूशन होगा. दोस्तों किसका एग्जीक्यूशन होगा? स्टैटिक ब्लॉक का. Abstract class static block, then demo class static block, and then IIB of abstract class. Same sequence wisely जैसे कि हमने ब्लॉक सीखे थे ना, सेम ब्लॉक एग्जीक्यूट होते हैं, डिपेंड्स ऑन द सीक्वेंस. नंबर ऑफ स्टैटिक एंड इंस्टेंस ब्लॉक हम यूज कर सकते हैं. तो जैसा उनका सीक्वेंस रहेगा वो सीक्वेंस वाइज वो क्या करेंगे? एग्जीक्यूट करेंगे. राइट, यहाँ तक हमारा हुआ है. एंड अब मेथड ओवर राइडिंग आप किस तरीके से होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट मेथड को ना ओवर राइट करते हैं हमेशा. इनकम्प्लीट मेथड कंप्लीट कर रहे हैं, ओवर राइट कर रहे हैं. व्हाट आर द रूल्स गाइस? यहाँ पे क्या होता है? एक्सेस मॉडिफायर. एक्सेस मॉडिफायर किस टाइप से होना चाहिए? सेम ऑर्डर या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में. उसके बाद कोवेरिएंट टाइप होता है, रिटर्न टाइप ओवर राइटिंग में. तो रिटर्न टाइप में कोवेरिएंट कंसेप्ट, हाउ वी कैन यूज दैट कंसेप्ट? तो सेम लेवल पे रखो या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में. ओके, इन डिक्रीजिंग ऑर्डर. जैसे कि टेस्ट क्लास में पब्लिक है, पब्लिक ये अभी इनकम्प्लीट फंक्शन नहीं है. राइट, ओके. abstract keyword is used. See, M1 is an abstract function, and which is the access modifier, which is what is the access level? Public is the access level of the M1. हम इसे ना इम्प्लीमेंट करते कहाँ? इनसाइड अ डेमो. अब डेमो में इम्प्लीमेंट करना है तो देखो हाउ कैन इम्प्लीमेंट इट. वाइड M1 with the right demo. Now, what kind of error is over there, guys? यहाँ पे ना error आ रही है. Cannot reduce the visibility of the inherited method from test. Visibility mode क्या था वहाँ पे? Inside the test class, public is a visibility mode.
And now in a demo, in a subclass, which is the access level, एक्सेस लेवल क्या है उसका विजिबिलिटी मोड डिफॉल्ट है क्योंकि हमने यहाँ पे कोई भी एक्सेस मॉडिफायर यूज नहीं किया मींस विच मॉडिफायर इज ओवर देयर डिफॉल्ट इज प्रेजेंट डिफॉल्ट इज लेस देन यस इट इज लेस देन पब्लिक एक तो सेम रखो या तो ग्रेटर देन पब्लिक कर देंगे तो एरर सॉल्व दिस इज द ओवररिडन मेथड implemented p2 dot test राइट एक्सेस मॉडिफायर का जैसे कि पॉलीमॉर्फिज्म में मेथड ओवरराइडिंग देखा था सेम एज इट इज वर्क करेगा उसके बाद हमेशा है ना हमें कोई भी मेथड ओवरराइड करनी है तो पब्लिक करके यहाँ से निकाल देते हैं तो आपको एरर आएगी नहीं क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पब्लिक डिफॉल्ट टू पब्लिक उसके बाद ना देखना है हमें कि एक्सेस मॉडिफायर सॉरी रिटर्न टाइप यहाँ पे अगर इंट लगा दिया है प्रिमिटिव टाइप पे यहाँ पे एरर आएगी यहाँ पे भी हमें इंट करना होगा राइट which is keyword return statement is necessary return 10 okay अब एरर सॉल्व तो प्रिमिटिव लेवल पे ना एक्सेस मॉडिफायर रिटर्न टाइप जो भी रहेगा हमारा एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन का सेम रिटर्न टाइप रहेगा ओके एक नंबर रेड है बाबू ओके अगर हमें चेंज करना है तो एक्सेस रिटर्न टाइप तो यहाँ पे अगर हम नॉन प्रिमिटिव जैसे कि टेस्ट क्लास ओके टेस्ट इज अ parent in our decision now there is a we can make return type for m1 is a text yes no problem but it return object okay we cannot make okay we can't make the object of which class is abstract class and which type of object is written it return because parent reference can hold the object of a child there is no issue okay can we make the return type as a demo no okay sorry in a decreasing order yes we can make it in decreasing order return type covariant type in a method of overriding method यहाँ तक आप लोगों का हो गया है ना पॉलीमॉर्फिज्म में आपको राइटिंग में ना एक्सेस लेवल इंक्रीजिंग ऑर्डर में और रिटर्न टाइप सेम ऑर्डर है तो डिक्रीजिंग ऑर्डर राइट ओके अब देखना है कि हाउ टू यूज इनहेरिटेंस इन आवर जावा प्रोग्राम हाउ कैन यूज द इनहेरिटेंस इन जावा प्रोग्राम गाइस हाउ कैन क्रिएट द इनहेरिटेंस इन जावा यस एनीवन how we create the inheritance sorry interface how can you use the interface in Java program by using the interface keyword what is the syntax for creating the interface in Java see guys what is the syntax using the interface keyword interface then interface name interface name and so class body it's like a interface also like seems like to the class views तो किस तरीके का होता है सेम एज इट इज क्लास लाइक जैसे कि क्लास की भी आफ्टर कंपाइलेशन डॉट क्लास फाइल क्रिएट होती है सेम एज इट इज इंटरफेस भी कंपाइल होने के बाद उसकी भी डॉट क्लास फाइल क्रिएट होती है जनरेट होती है एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट होता है ओके सेम एज इट अब जैसे कि हम मेन मेथड कहाँ यूज करते हैं विद इन द क्लास वी यूज द मेन फंक्शन अब इंटरफेस में मेन मेथड यूज कर सकते हैं गाइस नो वी कांट यूज मेन फंक्शन इन इंटरफेस क्या है डेटा हेडिंग बन सकते हैं
एब्स्ट्रैक्शन कंसेप्ट है। ओके, तो उसका ऑब्जेक्ट भी मिलता नहीं है, या तो वहाँ पे इम्प्लीमेंटेड फंक्शंस नहीं होते। व्हाट दैट मीनिंग, नो मींस मेन मेथड यूज कर सकते हैं, बट देयर इज एनी रूल टू यूज मेन फंक्शन इन इंटरफेस। वहाँ पे कोई रूल है क्या, नेसेसरी है क्या कि हमें मेन फंक्शन यूज करना है, कहाँ, इंटरफेस में। जैसे देखो नाउ सी फर्स्ट how to create an interface in Java in Eclipse. Right click P2, right click new and create an interface. Select which option guys, interface. Make the name of interface, create them. So its first letters could be in a capital letter. Mm, okay, ये बना हमारा इंटरफेस में जावा। Okay. Now see guys, there is any compilation error are used over their main function in an interface? No error, in no any kind of a error over there. Now what is the interface? अब interface क्या होता है कि abstraction achieve करने के लिए use करते हैं। Interface is like a class. It contains the variables and methods. Right? It doesn't contain any blocks and constructor. Okay. It contains only fields and methods. Fields means variables and methods. अब देखो देखो कि इंटरफेस एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरफेस एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हम मेन मेथड यूज कर सकते हैं। अब जैसे कि देखो यहाँ पे हमारी टेस्ट इज एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। नाउ कैन वी क्रिएट अ मेन मेथड इन एब्स्ट्रैक्ट क्लास? यस। यहाँ पे इसका एग्जीक्यूशन होगा क्या? नाउ सी होगा गाइस, run as java application. What is the output? Java is the output. क्योंकि इसकी डॉट क्लास फाइल बन रही है आफ्टर द कंपाइलेशन, तो मेन मेथड एग्जीक्यूट होती है कि होती है? यस। आफ्टर कंपाइलेशन एग्जीक्यूशन पॉइंटर कहाँ जाएगा? मेन मेथड जाएगा। बस हम यहाँ पे ना ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, ओनली क्या नहीं कर सकते, वी कांट क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास बस। बाकी हम यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ इट कंटेंट्स। हमने देखा है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में जनरल भी होती है, कॉन्क्रीट फंक्शन भी होते हैं ना, एब्स्ट्रैक्ट भी होते हैं। तो मेन मेथड भी हम बना सकते हैं। उस मेन मेथड से हम किसे कॉल कर सकते हैं गाइस? कॉन्क्रीट क्लास को, सॉरी कॉन्क्रीट मेथड्स को हम कॉल कर सकते हैं। ओके, यहाँ आ गए हम। देखो सी डेमो वन इज आवर इंटरफेस, which keyword is used over there guys? Interface keyword is used to create the for creating a interface. So अब इंटरफेस क्या होता है जावा में? इट सेल्फ एब्स्ट्रैक्ट होता है। हमें हमेशा डिक्लेयर करने की कोई जरूरत नहीं होती कि डेमो, हमने जैसे डेमो वन बनाया है ना इंटरफेस, नो देयर इज नो नीड टू डिक्लेयर इंटरफेस एज एब्स्ट्रैक्ट। बनाने की कोई जरूरत नहीं, इट सेल्फ क्या होगा, वो इट सेल्फ एब्स्ट्रैक्ट रहेगा। नाउ अगर यहाँ है ना हम कोई फंक्शन बना रहे हैं एज एब्स्ट्रैक्ट, यहाँ पे हमने बना दी फंक्शन। तो अब फंक्शन बना रहे हैं हम, क्लास में क्या होता था कि इफ वी आर क्रिएटिंग एनी फंक्शन एज एब्स्ट्रैक्ट वी आर डिक्लेयरिंग देयर और देयर, तो वहां पे कंपाइल टाइम एरर आ जाती थी कॉन्क्रीट क्लास के लिए। ओके, तो उस क्लास को है ना हमें एब्स्ट्रैक्ट बनानी होती है, तो हमें एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ता था। बट नाउ इन इंटरफेस वी आर क्रिएटिंग एनी क्लास एनी फंक्शन एज एब्स्ट्रैक्ट, तो कोई भी फर्क नहीं होता बिकॉज देयर इज नो एनी effect on an interface demo because interface is itself abstract। तो by default क्या होता है कि abstract होता है public होता है, right? अब interface content how many members है? fields means variables and methods, दो ही members को contain करता है, दो ही member हम use कर सकते हैं interface। एक तो variable
variable and second one is a numerator, right? Two types of members used in a इंटरफेस. अब इंटरफेस में दो तरीके की फील्ड्स हम मींस मेंबर यूज कर सकते हैं. तो वेरिएबल होता है, दूसरी होती है हमारी मेथड्स. Interface. Interfaces are declared with keyword interface, and interfaces are implemented by the class using implements keyword. अब हमेशा देखो कि इंटरफेस कंसेप्ट यूज कर रहे हैं, किसके लिए यूज कर रहे हैं? by using that concept to achieve the inter abstraction. तो totally abstraction, fully abstraction achieve करना है तो then we use the interface concept. And how, which type of members were used in a, this type of methods is in a interface only. Which kind? Abstract types of methods used in a interface. Means interfaces are totally abstracted, totally hiding. Okay, so now for abstract class we use a subclass. Why? For implementing a unimplemented incomplete functions in a subclass. Same as it is for interface. Which class is there in Java? Guys, implementation class is there for implementing the implementation details of those functions which is created, which is declared in a interface. इनकम्प्लीट फंक्शंस कहाँ पे हम इंप्लीमेंट करेंगे? इनसाइड अ इम्प्लीमेंटेशन क्लास. तो उस क्लास को क्या कहेंगे हम? इम्प्लीमेंटेशन क्लास ऑफ इंटरफेस. जो भी क्लास बनेगी हमारी उस क्लास को क्या कहेंगे हम? वी कैन से दैट इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ that interface, right? So interfaces should contain only abstract methods. Interfaces should not contain a single concrete method. तो interface में हम कोई भी concrete functions declare कर सकते हैं guys? No, any concrete functions is declared in an interface 8.7 and 8 version. Interface can have two types of members, fields and abstract methods. By default, every field of an interface is public, static and final. हर एक फील्ड होती है ना, हर एक वेरिएबल. इंटरफेस का क्या होता है? इटसेल्फ बाय डिफॉल्ट पब्लिक, स्टैटिक एंड फाइनल. फाइनल में कांस्टेंट होता है, वो स्टैटिक होता है. मींस वो डायरेक्टली किससे बिलोंग करता है? इंटरफेस से बिलोंग करेगा. पब्लिक में एक्सेस लेवल पब्लिक है, मींस वो कहीं भी हम उनके कोई भी इंप्लीमेंटेशन क्लास में उसे हम एक्सेस कर सकते हैं. Then you can't use any other modifier other than these three for a field of an interface. हम कोई भी फील्ड है ना प्राइवेट नहीं डिक्लेयर कर सकते, प्रोटेक्टेड नहीं कर सकते, डिफॉल्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक फील्ड उस इंटरफेस की किस टाइप की रहेगी गाइस? पब्लिक, स्टैटिक एंड फाइनल रहेगी. By default, all methods of interface are public and abstract. By default, interface itself is not public, but by default, interface itself is an abstract. By default, interface क्या होता है? itself abstract होता है, right? Now see. अब देखो कि हमने देखा है कि every field of a interface by default क्या होती है? वो public, static and final होती है. अब every field, every method of a interface by default क्या होती है? public and abstract होती है. public क्यों होती है? हमेशा वो public क्यों होती है guys? because हम उसे override कर रहे होते हैं in implementation class. तो उसका access level क्या रहे? higher रहे, क्योंकि उसे कोई भी क्लास में हम उसे इंप्लीमेंट कर सके विद लॉजिक. उसे इंप्लीमेंट करना है तो हमेशा उसकी एक्सेस लेवल क्या होती है? पब्लिक होती है बाय डिफॉल्ट. कोई भी मतलब हमें देने की जरूरत नहीं. देयर इज नो नीड टू मेक दैट क्लास मेक दैट मेथड एज अ पब्लिक. जैसे कि यहाँ पे फील्ड है ना, कोई भी फील्ड हम डिक्लेयर कर देते हैं. नाउ सी वी आर डिक्लेयरिंग ए नाउ और देयर इज अ कंपाइलेशन एरर. क्यों कंपाइलेशन एरर हुई? कि हमने देखा है कि फाइनल वेरिएबल, इफ आर यूज्ड एनी फाइनल वेरिएबल इन आवर जावा, so which thing is necessary with that final variable? assign the value. assigning the value, हमें क्या करना होगा? उसे वैल्यू असाइन करनी होगी. विदाउट असाइनिंग एनी वैल्यू तो उस वेरिएबल को हम कांस्टेंट यूज कर सकते क्या गाइस? नहीं. ओके, फाइनल अगर वेरिएबल बना रहे हो तो इट्स शुड बी नेसेसरी टू असाइन द वैल्यू. उसे वैल्यू असाइन करो. तो आप 100 वैल्यू क्या हुई? वेरिएबल की फिक्स वैल्यू है, फाइनल वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू. इसका नेचर क्या हुआ है बाय डिफॉल्ट? देखो कि यहाँ पे देखो ना, नेचर
यहाँ पे सेमी कॉलन लगा दिया है तो कंपाइलेशन एरर आ रही है। व्हाई कंपाइलेशन एरर? इंटरफेस का थ्योरी क्या है? इंटरफेस, एवरी फील्ड ऑफ इंटरफेस बाय डिफॉल्ट इज व्हाट इज पब्लिक, स्टैटिक एंड फाइनल। अभी फाइनल है तो फाइनल को हमें वैल्यू असाइन करना जरूरी होता है। इट्स नीड्स टू बी इनिशियलाइज विद अ वैल्यू। इसे वैल्यू के साथ इनिशियलाइज करना मस्ट रहेगा। ओके, ये इनिशियलाइज हो गए। अब यहाँ पे ना हमने एक मेथड बना देते हैं, m1 मेथड बना दी। नाउ यहाँ पे हमें एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड जरूरी है कि यूज करने की कोई जरूरत? ओके, देयर इज नीड्स टू मेक अ m1 फंक्शन एज एब्स्ट्रैक्ट। हमें एब्स्ट्रैक्ट बनाने की कोई जरूरत पड़ेगी क्या वहाँ पे? है क्या? नहीं है, बिकॉज एवरी मेथड ऑफ इंटरफेस बाय डिफॉल्ट क्या होती है? पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट होती है। हमेशा पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट रहेगी। कैन वी यूज एनी कॉन्क्रीट फंक्शन? देखो यहाँ पे ना बना रहे तो यहाँ पे देखो एरर, एब्स्ट्रैक्ट मेथड डू नॉट स्पेसिफाई अ बॉडी। एब्स्ट्रैक्ट मेथड डू नॉट स्पेसिफाई अ बॉडी। हम स्पेसिफाई कर सकते हैं कि उसकी बॉडी का एब्स्ट्रैक्ट मेथड की, क्योंकि m2 कहाँ डिक्लेयर किया हमने? वेयर वी क्रिएटेड द m2 फंक्शन। m2 मेथड इज क्रिएटेड इन अ डेमो 1 एंड डेमो 1 क्या है गाइस? हमारा इंटरफेस है, क्लास नहीं है। इंटरफेस है तो डेमो किसकी मेथड? m2 किसकी मेथड है? इंटरफेस की। इंटरफेस की हर एक मेथड बाय डिफॉल्ट क्या होती है? एब्स्ट्रैक्ट होती है। तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड को बॉडी होती है क्या गाइस? एब्स्ट्रैक्ट मेथड को हम इंप्लीमेंट करते हैं? इंप्लीमेंट नहीं करते, ओनली डिक्लेरेशन पार्ट होता है, हम उसे डिक्लेयर करते हैं गाइस। तो यहाँ पे हमने इसमें है ना बॉडी बना रहे हैं। अब बॉडी बना रहे तो ये पॉसिबल है क्या इंटरफेस में? कोई भी कॉन्क्रीट क्लास, हम कॉन्क्रीट मेथड यूज करते हैं हम इंटरफेस में? नो, ओनली देयर इज अ abstract methods are used in interface। दो ही तरीके के मेंबर्स होते हैं इंटरफेस के, एक तो वेरिएबल, दूसरा होता है मेथड। तो वेरिएबल बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं? पब्लिक, स्टैटिक, फाइनल होते हैं। उसके बाद नाउ आप मेथड्स अगर यूज कर रहे हो तो बाय डिफॉल्ट मेथड क्या होते हैं? पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। करेक्ट? अगर कॉन्क्रीट यूज करोगे तो नहीं, बट जावा 8, जावा 9 अगर न्यू वर्जन के हिसाब से चलेंगे तो हम इसे डिफॉल्ट करके डिक्लेयर कर सकते हैं या तो स्टैटिक करके हम इसे डिक्लेयर कर सकते हैं। वो तो बाद में का पार्ट हुआ, हम पहले तो देखेंगे कि इंटरफेस फुली एब्स्ट्रैक्शन हाउ वी कैन अचीव बाय यूजिंग द इंटरफेस कांसेप्ट एंड हाउ वी कैन अचीव द मल्टीपल इनहेरिटेंस बाय यूजिंग द इंटरफेस कांसेप्ट। कि अभी जो भी लेटेस्ट वर्जन है इनमें ना हम डिफॉल्ट मेथड यूज कर सकते हैं। तो डिफॉल्ट फंक्शन हम यूज करते हैं क्या गाइस? जावा में नहीं यूज करते, तो हम इसे डिफॉल्ट करके हम ये देखो बाय यूजिंग डिफॉल्ट कीवर्ड, जैसे अगर डिफॉल्ट कीवर्ड लगा देते हैं तो ये हम कंक्रीट मेथड हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब देखो गाइस ये हम बंदो, चलो कोई बंदा बोलेगा कि यार डिफॉल्ट यूज जब हम एक्सेस मॉडिफायर यूज नहीं करते हैं, then this kind of access modifier is present over there, default access modifier is present over there, but now why should we declare here? Why should we use a default keyword for m2 function? हमने यहाँ पे m2 के लिए क्यों यूज किया है डिफॉल्ट? हमें क्यों जरूरत है? बिकॉज यहाँ पर इंटरफेस में हमें कोई मेथड डिक्लेयर यूज करनी है कॉन्क्रीट, तो उस टाइम हम किस टाइप के मेथड यूज कर सकते हैं? डिफॉल्ट या तो स्टैटिक यूज कर सकते हैं। अब देखो स्टैटिक को हम ओवरराइड कर सकते हैं क्या गाइस? नो, वी कांट ओवरराइड द स्टैटिक मेथड्स। अब वो इम्प्लीमेंट क्लास में ओवरराइड होगी क्या? इम्प्लीमेंट क्लास में ओवरराइड नहीं होगी, बट वो एक्सेस होगी। अब डिफॉल्ट है तो डिफॉल्ट को ओवरराइड। अब देखो गाइस अगर हमको फंक्शन बना दिया है विद इम्प्लीमेंटेशन तो उसे ओवरराइड करने की जरूरत है? नहीं है। बट अगर सेम मीन्स वन थिंग इन मेनी फॉर्म यूज करना है, पॉलीमॉर्फिज्म करना है, तो यस हम ओवरराइड कर सकते हैं उसे। अगर पॉलीमॉर्फिज्म नहीं करना है तो कोई जरूरत नहीं ओवरराइड करने की। इंटरफेस की मेथड में अगर विदाउट इम्प्लीमेंटेशन एम्प्टी मेथड्स होंगे तो उसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं, कहाँ? इन इम्प्लीमेंटेशन क्लास। सो यहाँ तक आपका क्लियर है? तो नेक्स्ट टॉपिक है, हम उसे देखेंगे। ओके, किसी पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करने की जरूरत है? नो वे, मीन्स हमें यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। नो नीड्स टू डिक्लेयर m1 एज अ पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट। बाय डिफॉल्ट क्या हो? पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट। अब फील्ड भी क्या है बाय डिफॉल्ट गाइस? डिफॉल्ट पब्लिक, स्टैटिक एंड
हर एक मेथड क्या रहेंगे इंटरफेस के बाय डिफॉल्ट गाइस? यस, and static. पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट। हर एक मेथड क्या होती है बाय डिफॉल्ट पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट। What is the difference between an interface and abstract classes guys? Abstract class को हम abstract बनाना है तो abstract कीवर्ड यूज करते हैं। इंटरफेस को अगर इंटरफेस डिक्लेयर करना है तो इंटरफेस कीवर्ड यूज करते हैं। In abstract class we can use both types of methods, abstract as well concrete. In an interface only which kind of a methods we use over there? Only the abstract methods. Can we create a constructor in an interface? No, we can't create an interface and blocks in an interface, but we can create used constructor and blocks in an abstract class. Can we create a object of abstract? No, we can't create the object of abstract, but we can create a. Can we create an object of interface? No, we can create the object of an interface also. Okay. So these are the difference between abstract classes and interfaces. Partial abstraction achieved by using the abstract classes concept. Fully abstraction is achieved by using the concept of the interface. Okay. See, अब यहाँ तक तो ठीक है। अब इम्प्लीमेंटेशन क्लास। ओके, ये तो बना हमारा इंटरफेस। इंटरफेस को हमें इम्प्लीमेंट करना है। अनइम्प्लीमेंटेड मेथड इम्प्लीमेंट करनी है तो हाउ? क्लास C using which keyword? implements। इसे इम्प्लीमेंट करेगी डेमो। ओके, देखो टी क्लास के लिए यहाँ पे क्या आ रहा है? कंपाइल आ रहा है क्योंकि यहाँ पे अनइम्प्लीमेंटेड क्लास फंक्शंस अवेलेबल है तो यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देते हैं। अब यहाँ पे देखो कि void m1 करके बना रहे हैं तो पॉसिबल है गाइस? नहीं है क्योंकि विजिबली मोड क्या है हमारा इंटरफेस मेथड का? पब्लिक है। पब्लिक है तो यहाँ पे भी हमें पब्लिक रखना जरूरी है, रिड्यूस नहीं कर सकते। ओके, अब है यस इज इट पॉसिबल, राइट। अब यहाँ पे हमने इसे कंप्लीट कर दिया तो ये क्या हुआ? m1 मेथड क्या हुआ यहाँ पे? ओवरराइड हो रही है, राइट, जो भी डेमो में अवेलेबल थी। तो हाउ वी कैन मेक अ रिलेशनशिप बिटवीन अ इंटरफेस एंड क्लास? हाउ कैन मेक अ रिलेशन बिटवीन अ class and interface guys? By using the implements keyword. Implements keyword means which is relation, which relation is over there guys? Inheritance relation. Okay, it implements to whom? Demo interface। अगर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना है, इंटरफेस के मेथड्स को इम्प्लीमेंट करना है क्लास में, तो क्लास एंड इंटरफेस का रिलेशन कैसे बनाना होगा? बाय यूजिंग व्हिच कीवर्ड? हाउ कैन मेक अ रिलेशन? बाय यूजिंग द इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड। इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड यूज करके हम रिलेशन बनाते हैं। अगर इंटरफेस यूज करना है तो क्लास टू क्लास एक्सटेंड कीवर्ड, क्लास टू इंटरफेस इम्प्लीमेंट्स एंड इंटरफेस टू इंटरफेस एक्सटेंड कीवर्ड। लुक, क्लास टू क्लास क्लास टू क्लास क्या यूज करते हैं? एक्सटेंड। Yes. क्लास टू क्लास एक्सटेंड कीवर्ड। इंटरफेस टू क्लास गाइस implements, or interface to interface guys
Okay, interface to interface extend. क्लास टू क्लास एक्सटेंड कीवर्ड, अगर इंटर इनहेरिटेंस करना है क्लास टू क्लास तो मेक अ रिलेशन बिटवीन टू क्लासेस, हाउ कैन मेक रिलेशनशिप रिलेशन बिटवीन टू क्लास बाय यूजिंग द एक्सटेंड कीवर्ड। अगर इंटरफेस क्लास इंटर रिलेशन करना है हमें, हाउ कैन मेक द रिलेशनशिप बिटवीन इंटरफेस एंड क्लास बाय यूजिंग द implements कीवर्ड, implements, okay, and how can make the relation between interface to interface extend keyword. One interface can extend more than interface, we'll see later, and one class can implement more than one interface, we'll see later. Now see about the only interface concept. Why we use the implementation class, guys? To implement the unimplemented methods, unimplemented, incomplete methods. Now इंटरफेस में किस टाइप की मेथड्स होती है, इनकम्प्लीट मेथड्स होती है, उन्हें इंप्लीमेंट करने के लिए हम इंप्लीमेंटेशन क्लास यूज करते हैं। अब डेमो एक हमारा इंटरफेस था, उसका इंप्लीमेंटेशन पी इज द इंप्लीमेंटेशन क्लास ऑफ डेमो फंक्शन। नाउ हियर वी इंप्लीमेंट द ऑल द इनकम्प्लीट मेथड्स इन अ इंप्लीमेंटेशन क्लास, गाइस। अगर यहाँ पे भी ना मल्टी इनहेरिटेंस होता है, नाउ सी हाउ M2 गाइस। हाँ, नाउ यहाँ पे हमने अगर उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर दिया है, सारी मेथड्स हम इम्प्लीमेंटेशन क्लास में बना दिए गया टी इम्प्लीमेंटेशन क्लास में, नहीं, only one method is implemented over there M1, now remaining one method is available, so make that class as a abstract। इस क्लास को हमें क्या करना होगा, जरूरी make that class as a abstract, हमने उसे abstract डिक्लेयर कर दिया। तो यहाँ तक क्या हुआ, एक क्लास था, एक इंटरफेस है, वहां से इम्प्लीमेंटेशन की क्लास बनी, इनहेरिटेंस पासिंग कर, but now class extends multi-level inheritance T को कर रही है, तो वही यस यहाँ पे इनकम्प्लीमेंटेड मेथड्स इसे ओवरराइट कर देना, ओवरराइट एट द रेट ओवरराइट, तो M2 मेथड ओवरराइट हुई है, यस, ये हुआ हमारा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। डेमो वन को किसने इंप्लीमेंट कर दिया है, टी क्लास में, टी को किसने एक्सटेंड किया है, डी क्लास में, तो ये जो एक उनका रिलेशन हुआ, वो किस टाइप का रिलेशन हुआ गाइस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ओके, गॉट इट। तो इंटरफेस कब यूज करते हैं हम, फुली एब्स्ट्रैक्शन अचीव करना है तो बाय यूजिंग द इंटरफेस कांसेप्ट वी कैन अचीव द फुली एब्स्ट्रैक्शन। नाउ सी, यहाँ तक by default interface itself is not public, public होता है कि itself नहीं, but by default itself वो abstract होता है, right? कल कितने बजे क्लास है आप लोगों का सेलेनियम का गाइस?